Assalamualaikum. I am Mehrunisa. Chapter number 14, The Atmosphere. We are going to study today pollutants, types of pollutants, sources of air pollutants that include the oxides of carbon. Starting from, what are pollutants? Pollutants are any waste material that pollutes air, water or soil. So the pollutants, if any material that pollutes the air, that disrupts the quality of air, water or soil, we will call them pollutants. जिसकी वजह से हवा की क्वालिटी खराब हो जाए, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो, मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमन हेल्थ हैजर्ड पैदा हो और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स को इश्यूज पैदा हो, उन्हें हम कहेंगे pollutants. The pollutants can be borne by air, so they will be called as air pollutants. They can be water, we can call them water pollutants, and they can be soil, we call them soil pollutants. अब कोई pollutant कितना ज़्यादा dangerous है, it will be determined by three factors. One, how much persistent it is, ये कितनी देर तक उस particular environment में रह सकता है. More persistent the pollutant is, more dangerous it is. जो जितनी ज़्यादा देर तक किसी particular area में रह सकेगा, for example in air, then it will be really dangerous. Second thing that will determine its chemical nature. For example, sulfur dioxide and sulfuric acid, both are two different types of chemicals. लेकिन sulfur dioxide is less dangerous as compared to sulfuric acid because of their chemical nature, because of their bonding properties. Sulfuric acid is more persistent, more dangerous as compared to sulfur dioxide. The third thing is its concentration, its quantity. Greater the concentration, more harmful it is. Lesser the concentration, less harmful it is. So pollutants are any unwanted materials जो कि किसी भी particular health hazard का reason बनेंगे, we will call them pollutants. And how dangerous a pollutant is, it depends upon three factors: its persistence, its chemical nature and its concentration. The pollutants, they can be formed naturally, or either they can be formed by human activities. We will learn each source in our next topics. Now there is one thing we should be clear about: what is pollutants and what are contaminants. Pollutants, any harmful thing, any harmful material, that could be solid, that could be liquid, that could be gas, that is harmful in nature. But any material, any unwanted material that can be harmful, that can be good. For example, let me explain you via an old method of finding penicillin. Scientists in the around World War II, एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्जर्स को. उनको जब भी कोई ज़ख्म होता था, दे गेट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू कट दैट पर्टिकुलर एरिया. अगर बाजू पे उनको ज़ख्म होता था, देयर आर्म हैज़ टू बी कट आउट. तो साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे कि हाउ वी कैन मेक एन एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज. So one of the scientists was working on it, और उन्होंने एक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे थे इन अ पेट्री डिश और वो चेक कर रहे थे. He went for a vacation, कहीं घूमने गए, and when he came back, he saw a green mold was inside in this. उसकी जहाँ पर वो बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे, वहाँ पर एक ग्रीन मोल्ड उगाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जितने भी बैक्टीरियाज उन्होंने उगाए थे वो सारे के सारे खत्म हो गए. लेटर ऑन उसने इसी तरह से उस ग्रीन मोल्ड में से उस केमिकल को निकाला, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसने इसके जरिए से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, एंड ही केम टू नो दिस इज पेनिसिलिन. तो द ग्रीन मोल्ड जो कि बाहर से कहीं से उड़ के इस पेट्री डिश में आ गया था, इट इज अ कंटेमिनेंट.
क्योंकि हालांकि ये पेनिसिलिन कितनी ज़्यादा अच्छे पर्पस के लिए बाद में यूज़ की गई, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक फॉर किलिंग द वाउंड्स इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियाज, सो इट इज़ अ कंटेमिनेंट। ये अच्छा भी हो सकता है कंटेमिनेंट, बुरा भी हो सकता है। जैसे कि कोई एप्पल खाते हैं, आपको बाद में पता चलता है द एप्पल हैड पेस्टिसाइड ऑन इट, उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड लगा हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू गेट स्टमक एच, आपके पेट में दर्द होती है। सो दैट पेस्टिसाइड इज अ कंटेमिनेंट। सो कंटेमिनेंट इज एनी अनवांटेड केमिकल, एनी अनवांटेड मटेरियल जो कि हार्मफुल भी हो सकता है, जो कि अच्छा भी हो सकता है। बट पॉल्यूटेंट्स दे आर ऑलवेज हार्मफुल। तो इससे एक बात हम कह सकते हैं दैट ऑल द पॉल्यूटेंट्स दे आर कंटेमिनेंट्स ऑल्सो, बट ऑल द पॉल्यूटेंट्स, ऑल द कंटेमिनेंट्स आर नॉट पॉल्यूटेंट्स। जितने के सारे के सारे कंटेमिनेंट्स पॉल्यूटेंट्स नहीं है, बट जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर कंटेमिनेंट्स। So let's move on toward its types. Before going toward that, as our chapter is atmosphere, so any pollutant that is causing any change in the air composition, we will call it to be air pollutant. So here a pollutant is a waste material that pollutes the air, water or soil. And how do we determine how much dangerous it is? It is by its chemical nature, its concentration and its persistence. And they can be created by human activities or by nature itself. So here is the difference between contaminants and pollutants. The pollutants are any substance that cause pollution, and contaminants, they can make something impure. Contaminants can be good, they can be harmful, but pollutants are always harmful. So the pollutants, the harmful substance that are present in the air, they are called as air pollutants. So there are two types of pollutants, primary and secondary. प्राइमरी जो कि नेचुरली किसी भी सोर्स से बने, या जो सबसे पहले किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो सबसे पहला केमिकल इंट्रोड्यूस होता है एयर में, हम उसे कहते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, many of the hydrocarbons and other small air pollutants. But when they react together or with the water, they form secondary air pollutants, such as nitrous oxide react with oxygen and form nitrogen dioxide. Similarly, sulfur dioxide reacts with oxygen and forms sulfur trioxide. Sulfur dioxide reacts with water and forms sulfuric acid. So primary air pollutants that are formed naturally or by human source, they are formed in the first reaction. और जब primary air pollutants they combine together or with the water, they form secondary air pollutants. It is important for short question. So primary air pollutants that are the waste or exhaust product, and usually it is formed by the combustion of fossil fuels and organic matter. They can be sulfur oxides of sulfur, they can be oxides of carbon, nitrogen or hydrocarbons, and when they react together or with the water molecules, they form secondary pollutants such as sulfuric acid. Sulfur dioxide reacts with water, we get sulfuric acid. Sulfur dioxide is a primary air pollutant. जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, it gives secondary air pollutant. Secondary air pollutant कभी भी डायरेक्टली किसी तरीके से भी नहीं बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पर स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, द स्मोक विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, पर कभी भी कार्बोनिक एसिड स्मोक में नहीं होगा. हाउ कार्बोनिक एसिड विल बी फॉर्म? इट इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर. So it is a secondary air pollutant. So primary, they will be always be formed in the first reaction, and when the primary reactants react together or with the water molecules, they form secondary pollutants. So we have different types of air pollutants. Out of these, we know about 99% of our atmosphere contain nitrogen and oxygen. Any change in these quantities can cause different types of air pollutants. We know carbon dioxide is also in very minute quantity. If it is increases in its quantity, it is still an air pollutant. So we are going to discuss today oxide of sulfur. How do we get carbon dioxide or carbon monoxide, which is a primary air pollutant? हमें ये सारे दोनों pollutants कैसे मिलते हैं? तो naturally the first reason is by the decomposition of organic matter. Organic matter such as plants, dead animals, dead plants, जब इनकी bodies by the action of bacteria they decompose, we get carbon dioxide from it.
Other than that, naturally, by volcanic eruption, a large amount of gases is produced, majorly carbon dioxide or carbon monoxide from this volcanic eruption. अब इन दोनों कामों में human का कोई हाथ नहीं है. It is formed naturally. But where are human activities are causing the oxides of carbon? By burning the fossil fuels, petrol, natural gas और अदर फॉसल फ्यूल्स जब हम उन्हें बर्न करते हैं either किसी क्लोज्ड जगह पे या कहीं खुली जगह पर, always carbon dioxide will be formed. Major source of carbon dioxide is by vehicles, either car, motor cars, buses, different types of tractors and other large vehicles. Also industries that releases a lots of carbon dioxide and carbon monoxide into the air. The third most important reason of carbon dioxide is burning of forest. साल में एक मर्तबा एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट बर्न्स बिकॉज ऑफ वेरी लो ऑक्सीजन और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से द फॉरेस्ट बर्न्स इटसेल्फ. कभी कभी खुद भी फॉरेस्ट बर्निंग शुरू हो जाती है और कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी फॉरेस्ट बर्न होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. सो मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन, बर्निंग एक्शन. तो कोई भी नेचुरल चीज जब बर्न करेगी इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. Carbon monoxide is more dangerous as compared to carbon dioxide. So the three reasons, the three sources are natural, that include volcanic eruption and decomposition, human activities that include the burning of fossil fuels, coal, petroleum and natural gas, and the last one is forest fires. And anywhere when you burn anything, carbon dioxide and carbon monoxide will be formed, and carbon monoxide is more dangerous. So you must learn all of these terms. These are important as short questions. So our topic for today ends here.